We are thrilled to have you join us for the event that we are having today. Professional Beauty India is a leading beauty trade show that brings together professionals and businesses from hair, beauty, and wellness industries. Our event features exhibitors showcasing a wide range of products, techniques, and services. From educational seminars to live demonstrations and networking opportunities, Professional Beauty India provides a platform for industry professionals to discover new trends, products, and techniques, as well as connect to experts and peers from the field. We would like to extend our gratitude to our sponsors who have made this event possible. 310X, our title sponsor, Iconic as our powered by partner, Beauty Garage as our hair care partner, Mark as our hair tools partner, Europe Girl as our makeup partner, Shills as our nail care partner, Skinora as our skincare partner, and Cohort as our recruitment partner. The all new PBHJ June July edition is now live. Visit the PBHJ booth to get your latest copy, and we have loads of gifts waiting for you. Make sure to grab your copy and stay updated with latest news of industry. Also, don't forget to follow us on Instagram at Pro Beauty India to stay updated with the latest news and industry trends. Thank you. Let's welcome our artist. Let me introduce you to her. She is Andrea Louca from Kryolan, Delhi, and she'll be exhibiting a exclusive masterclass for you all today. She'll introduce herself in a few minutes, so let me give her the time to set up the stage. Hi everyone. You all good? Yeah? Perfect. So, we're going to get started. You all comfortable? Yeah? Perfect. Ready? Yeah. So, namaste everyone. My name is Andrea Louca and I'm an international makeup artist for Kryolan. I'm here in India to teach you all my tips and tricks and a specialist amount of makeup tips that I've learned all over the world from traveling. So today's demonstration is going to be all about 4K bridal. Is anyone in the room works with brides? Does anyone do bridal makeup? Yeah? But you might have to Yeah. translate. आप लोग ब्राइडल मेकअप करते हो? Am I audible? आप लोग को सुनाई दे रहा है? Okay, wonderful. So yeah, हमारे साथ आज एंड्रिया है. एंड्रिया हमारी इंटरनेशनल ट्रेनर है. And आज जो हमारा मेकअप का टॉपिक है, which is 4K bridal makeup. क्या आप ब्राइडल मेकअप आप लोग सब करते हो? I'm sure. क्या आप लोगों ने अल्ट्रा HD मेकअप के बारे में सुना है? 4K मेकअप के बारे में सुना है? This is what Andrea is going to explain today. Okay, so just to explain what I've done before, just about who I am as an artist, I actually specialize in beauty, bridal, editorial, high fashion. I absolutely love doing beautiful makeup. So for me, it's quite a passion to make everyone feel and look beautiful. Yeah? So for today's demonstration, the first thing that I did is cleanse the skin. I actually cleansed the skin before my lovely model came on stage, and I used 2 products. But what I'll do is, if you want to learn anything more in depth with products, if you come over to the Kryolan stands, I can actually personally work with you to make sure that you understand and learn the products that we used. हम लोगों ने स्किन को क्लीन किया है 2 प्रोडक्ट यूज करके. सबसे पहले हम लोगों ने हाइड्रो ऑयल यूज किया है, उसके बाद माइसेलर वाटर यूज किया है और इनके स्किन को प्रिपेयर किया है. अगर आपको जैसे इन डेप्थ नॉलेज चाहिए प्रोडक्ट के बारे में जानना है, डिफरेंट रेंज ऑफ प्रोडक्ट के बारे में जानना है, ऑलवेज बेटर कि आप हमारे स्टॉल पे आइए. स्टॉल नंबर 700 क्रायलन का स्टॉल है. वहां पे आप हमारे इन बूथ प्रेजेंटेशंस भी हो रहे हैं लगातार. आज और 3 प्रेजेंटेशन होंगे इसके अलावा. आप वहां पे डेफिनेटली आइए, प्रोडक्ट के बारे में जानिए. वहां पे आज हमारा कुछ स्पेशल डिस्काउंट ऑफर्स भी चल रहे हैं, सो प्लीज अवेल कीजिए स्पेशल डिस्काउंट ऑफर्स. या, so Andrea, what are you doing now? So
The first thing I'm going to do is prime the skin, and I'm actually using 2 brand new primers from the digital complexion range. I'm going to pass that over to you. Sure. Yeah. So, yeah, carry the on. primer that I'm actually using is for dry skin. So this is a beautiful milky consistency and that will really hydrate the skin, making sure that the skin looks beautiful and flawless. एग्जैक्टली ये जो 2 प्राइमर है, इस प्राइमर का नाम है डिजिटल कंप्लेक्शन प्राइमर फॉर ड्राई स्किन एंड डिजिटल कंप्लेक्शन प्राइमर फॉर ऑयली स्किन। ये दोनों प्राइमर्स है आपके 4K प्रोडक्ट के रेंज से। जो अभी एंड्रिया लगा रहे हैं हमारे मॉडल की स्किन पे, वो है डिजिटल प्राइमर्स फॉर ड्राई स्किन। इससे आप देखोगे ये अच्छा सा ग्लो है, बहुत सुंदर आपके स्किन को हाइड्रेट करता है सबसे पहले, क्योंकि हमें पता है हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है मेकअप के लिए, है ना। अगर स्किन में ऑयल ना भी हो दैट डज नॉट मैटर, क्या जरूरी है हाइड्रेशन। सो ये जो प्रोडक्ट है ये आपके स्किन को हाइड्रेट भी करेगा एंड द सेम टाइम जो जो ब्यूटीफुल ग्लो आप देख रहे हो वो भी लेंड करेगा स्किन को। And as you can see, I'm actually applying the primer with my beautiful duo fiber brush, and then I'm pushing it into the skin. So I'm using my fingertips. I've cleaned my hands, I've sanitized my hands, and I'm just pushing in this amazing primer into the skin. Yeah. तो इस प्राइमर को सबसे पहले इन्होंने जो हमारा डुअल फाइबर ब्रश है, बफिंग ब्रश, इससे इन्होंने लगाया। लगाने के बाद हमेशा आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप प्राइमर कभी भी ज़्यादा नहीं लगाएं। उसके लिए द बेस्ट थिंग इज आप ब्रश से एप्लीकेशन के बाद आप अपने फिंगर से उसको थोड़ा सा स्किन में पुश इन कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्राइमर स्किन के अंदर थोड़ा सा पेनिट्रेट हो सकता है, इट विल बी ऑलवेज बेटर। उसके बाद अगर कुछ एक्स्ट्रा है उसको आप निकाल भी सकते हो। सो एक्चुअली आप फील कर सकते हो कि कितना प्राइमर आपने लगाया, कितना अब्सॉर्ब हुआ, कितना ऊपर है। Okay, so the next thing that I'm going to do is I'm actually going to conceal the face first, just to make sure I've got a nice, beautiful balance on the skin. And the product that I'm going for is the new Digital Complexion. This is our brand new primer. This gives you a beautiful, flawless finish to the skin, and it actually works like a filter. So if you have any models or any clients that have a few blemishes, a little bit of scarring, this will actually create a beautiful blur effect on the skin. We have an array of 28 different colors, and we also have some really beautiful color correcting shades as well. The color that I'm going for is 016. वंडरफुल। ये जो एंड्रिया भी यूज कर रहे हैं ये ट्विस्ट अप पेन कंसीलर पेन्स है, 4K प्रोडक्ट रेंज से ही है ये प्रोडक्ट कंप्लीटली स्मच प्रूफ है। एक बार जब आप लगाओगे इसको ये कंप्लीटली स्मच प्रूफ हो जाता है, बहुत अमेजिंग कंसीलिंग पावर है। एंड द बेस्ट थिंग कि ये आपके स्किन को ड्राई नहीं करता, स्पेशली आप जनरली जो पेन कंसीलर्स होते हैं उन प्रोडक्ट्स को जब आप यूज करते हो थोड़ा सा थिक होता है, ड्राई होता है। जैसे आप अंडर आइज में कंसीलिंग करते हो ड्राईनेस आता है और आपके जो फाइन लाइंस है वो और ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं। बट ये जो प्राइमर है डिजिटल कंप्लेक्शन का, सॉरी जो कंसीलर है डिजिटल कंप्लेक्शन का, इससे बेसिकली आप क्या कर सकते हो, आप अपने बहुत अच्छी तरीके से जो भी ब्लेमिशेस है, जो भी इम्परफेक्शंस है उसको आप कंसील कर सकते हो। एंड एट द सेम टाइम आप अपने स्किन में कोई भी ओवरलोड ऑफ प्रोडक्ट नहीं होता है इससे। I actually wear this concealer, and I have open pores and texture to my skin, and it actually makes my skin look beautiful and flawless without applying any over amount of product. It's really important when especially when you're doing anything with 4K, understanding the intensity and the dimension of the camera itself. Thank you. So as you can see, I'm just going to do one side, and I don't know whether you can see on the camera or on the screens, especially because we are working with 4K screens. Just around that area, my lovely model had a few open pores and a few texture. But if you look at the screen, can you see how it's blurred? This is a perfect example of how this product works. So as you can see on the screen, it's actually made her skin beautiful and smooth. And that's the technology that we've done and we've tried and tested in this range of the digital complexion, is that it actually creates that flawless filter to the skin. So you'll see on my table, I don't have any derma,
color. I don't have any TV paint sticks. I don't have any supra color products because this product actually gives me a light to medium coverage, but gives me that beautiful flawless filter. So basically जो 4K प्रोडक्ट इसी तरीके से डेवलप किया गया है कि आपके स्किन में कोई भी इम्परफेक्शंस है इन टर्म्स ऑफ टेक्सचर, अगर आपके ओपन पोर्स है, अगर आपके फाइन लाइंस है, उसको भी ये ब्लर आउट करता है. इसमें एक फंक्शनल फिलर्स होते हैं और जो कि एक फिल्टर्ड इफेक्ट देता है. जो हम जनरली इंस्टाग्राम या कुछ भी हम ऐप यूज करते हैं जिसमें हम कोई भी फिल्टर लगाते हैं जिससे हमारा स्किन स्मूथ हो जाता है, उसी तरीके का इफेक्ट आपको एक्चुअली इस प्रोडक्ट को यूज करने से ही हो जाता है. So this is the concealer. So the concealer has a beautiful, rich formula. And when I do have something like a blemish in an area, I'll apply it. So I'm actually applying it with our beautiful Blue Master range. This is a vegan range that we've launched at Kryolan. And I'm using a really lovely duo fiber stippling brush. I also have my blending brush to hand. And again, I've got this beautiful, soft filter. Like this is like a buffing technique. This brush, I always use these together. And if anyone's seen me demo before, these are my favorite brushes to work with. So with this blending brush, so I've applied with my duo fiber, and now I'm going to actually blend it out with this brush. Yeah. So जो टूल्स आज एंड्रिया यूज कर रहे हैं वो मोस्टली जो ब्रशेस हैं वो ब्लू मास्टर रेंज से है. ब्लू मास्टर रेंज हमारा वीगन रेंज ऑफ ब्रशेस है. अगर आप देखना चाहो हमारे आप स्टॉल में आ सकते हो, आप देख सकते हो. वी हैव अ वंडरफुल एंड अ वाइड रेंज है हमारे ब्लू मास्टर ब्रशेस के. ये अगेन वीगन रेंज ऑफ ब्रशेस है. बेसिकली हमें इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जिस ब्रश से हम प्रोडक्ट को लगा रहे हैं हमें दूसरे ब्रश से उसको ब्लेंड करना चाहिए. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो इन्होंने सबसे पहले स्टिपलिंग ब्रश से लगाया प्रोडक्ट को और दूसरा जो ब्रश है उससे इन्होंने ब्लेंड किया. So as you can see, I'm applying my product in the areas where I feel like I need that little bit more coverage. This is really important if you're working with anyone that's got a little bit more texture to the skin. And then I get my beautiful blending brush and I just blend the areas. And as you can see, I'm not doing over amount of movement. I'm just padding it into the skin. So अगर आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो, प्रोडक्ट लगाने के बाद भी कोई ओवरलोडिंग ऑफ प्रोडक्ट नहीं है, बहुत केकी या हैवी कुछ नहीं है. इन प्रोडक्ट्स का फॉर्मुलेशन ऐसे है, बहुत माइक्रोनाइज्ड है इनके पिगमेंट्स. एंड आप देखोगे स्किन के अंदर एकदम पेनिट्रेट होके कोई आपको एक्सेस ऑफ लेयर जो स्किन होता है वैसा नहीं दिख रहा है. So if you want to, you can go in with a foundation first if you prefer. But I actually like going in with a concealer because I actually can be quite intricate in the area where I'm placing my coverage. So as you can see, I've got a minimal amount on my plate. I apply it in the area and just keep blending. And this product is a self-setting product. So because it is self-setting, I'm actually applying it and blending it as I go along, rather than leaving the foundation or the concealer or whatever product that you're using on the skin. I'm doing an application and I'm blending as I go along. So it's basically the concealer that you're applying. There's no Yes. foundation that you've No. applied as of This yet. is the digital complexion concealer. Yeah. Avik, would you like to explain the Would you like to explain the concept behind digital complexion? Yeah, exactly. So जो digital range of products है हमारे वो basically 4K technology के लिए बनाया गया है. आप हम लोगों ने HD या हाई डेफिनेशन कैमरास देखे, हाई डेफिनेशन चैनल्स देखे, उसमें जो पिक्चर की क्वालिटी है ना, हर एक इंट्रिकेट चीज दिखता है उसमें. ये जो टेक्नोलॉजी है और ये जो कैमरा टेक्नोलॉजी है ये उससे भी एडवांस है. 4K, 8K, 16K ये HD से भी 4,000 टाइम्स ज्यादा इम्प्रूव्ड है. आपको हर एक चीज दिखता है उसमें और ज्यादा क्लैरिटी है और ज्यादा डेफिनेशन है. 4K मतलब 4,000 times of pixels, 4,000 times of आपकी क्लैरिटी. ठीक है, उसमें आप कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं लगा सकते जिसमें आपको बहुत ज्यादा थिकनेस या बहुत ज्यादा हैवीनेस दिखे, नहीं तो वो भी कैमरा पिक कर लेगा. Okay, so that is the skin completely concealed.
I'm going to keep this on my palette. So when, just in case I need to add a little bit of concealer afterwards, I can come back to this product and use it again. So I'm going to put my plate down, and I always keep my brushes nice and separate to keep them nice and clean. So the next product that I'm going to go for is the Digital Complexion Cream Foundation. So if anyone's used any Supra or TV paint stick in the room, does anyone use Supra Color? Yeah. Yeah. This is an updated or a redefined version of the Supra. The difference is with our cream foundation from the Digital Complexion range, this actually works amazing for 4K, 8K, or any high dimension when it comes to the camera, and especially your smartphones. Everyone that has a smartphone now has a really intricate camera that will be very, very high definition. These products work amazing for that. So if anyone does bridal and they're really worried about their makeup looking cakey and heavy underneath the new development of cameras, this product will make your skin look beautiful and smooth. So this is this beautiful palette. It comes in a 28 color palette as well as a 14 color palette. And you've got a beautiful array of different colors for Indian skin tones. We have our dark tones, our olive tones, our yellow tones, and our pink tones. So you can color correct and play around with all the colors in these palettes. Yeah? Yeah. So ये basically हमारे digital complexion cream foundation है. इसका palette जो आपने देखा, ये basically आपका 14 color and 28 color palette combinations में available है. इसमें yellow, olive, pink and dark और deep colors के product range या color range available है. For 20 minutes. Okay. Okay, so what I'm going to go for is a little bit more of an olive undertone. My lovely model has a little bit more of a deeper, dusky skin, but I want to make sure that the skin is nice and bright. Using something that's olive in tone really, really complements on Indian skin tone. So anything that's on an olive, if you really want to add a little bit of yellow because there's a little bit of redness in the skin, or let's say that there's a little bit of darkness, you'd use your pink. I'm going to go first with the olive tone and I'm going to see how it's working. And again, the Digital Complexion range is actually a self-setting product. These creams are all self-setting. Yeah? So आपके डिजिटल रेंज के जो सारे प्रोडक्ट्स है, चाहे वो कंसीलर है, चाहे लिक्विड फाउंडेशंस है, चाहे आपकी क्रीम फाउंडेशंस है, ये सारे सेल्फ सेटिंग प्रोडक्ट है. जरूरी नहीं है कि आपको इसके ऊपर पाउडर लगाना है. ये बिना पाउडर के भी सेट होता है. बट यस, अगर जैसे हम लोग इंडिया में काम करते हैं, बहुत गर्मियां हैं, so इसमें हम स्पेशली जहां मूवमेंट वाले एरियाज है, स्पेशली अंडर द आईज, लाफ लाइन के अराउंड, हम हल्का सा पाउडर या सेटिंग या फिनिशिंग पाउडर यूज कर सकते हैं. अभी जब एंड्रिया काम करेंगे, आप देखोगे लास्ट में इसका जो एक फिनिशिंग पाउडर है, डिजिटल कंप्लेक्शन फिनिश पाउडर, उसको भी हम यूज करेंगे. वो डेफिनेटली एक सेटिंग के अलावा वो एक ब्लरिंग या एक फिल्टर्ड इफेक्ट को और एड ऑन करने में भी हेल्प करेगा. So I'm using this color here, the more yellow based color, as my lightening color. So I'm just adding a little bit of light into the face. I'm then going to add a little bit of a shading color because with highlight and shade, they need to be blended together. They absolutely work amazing together. So ये एक highlighting color है जो इन्होंने क्रीम से लिया है. डिजिटल कंप्लेक्शन क्रीम से इन्होंने एक हाइलाइटिंग कलर लेके स्पेशली हाइलाइटिंग एरियाज पे ही लगा रहे हैं. उसके बाद एक डार्क कलर लेके स्किन को हम लोग कॉन्टोर या फेस को हम लोग कॉन्टोर भी करेंगे. And I'm just using a larger brush because I've already added concealer, and I'm using more of a larger, fluffier brush because I don't want to add any friction to the face. What I want to do is I want to make sure that I'm applying the product nice and balanced, but without too much friction because I don't want to lift off the product that I've already used. Yeah. हम बहुत ज़्यादा स्किन को रब नहीं करेंगे या बहुत ज़्यादा ब्लेंडिंग मूवमेंट में नहीं लगाएंगे जब हम हाइलाइटिंग कर रहे हैं या हम जब शेडिंग कर रहे हैं. हमें बेसिकली थोड़ा सा डैबिंग मोशन में ही लगाना है. आपको वो देखने में बहुत ब्लेंडिंग वाला स्ट्रोक लग रहा होगा, बट जब ये लगाते हैं ब्रश का स्ट्रोक इज मोर ऑन द टैपिंग मूवमेंट.
ताकि नीचे का जो लेयर है वो हटे ना या वो डिस्टर्ब ना हो. Okay, so I'm now moving towards a more deeper tone, and the color that I'm using is D33, which is from the darker tone range. And as you can see, it's a deep, beautiful, deep dark shading color. So it's really important when you pick your shading tones that you pick a product that actually is complementary to your customer or your client or your bride that you're working with. Yeah. I'm actually going to pick up another brush. So I've always got my applicator brush, and then I've always got a blending brush. So ये आप लोगों ने देखा होगा कि जिस ब्रश से प्रोडक्ट एप्लीकेशन करते हैं हमेशा क्लीन ब्रश से हमें ब्लेंडिंग करना जरूरी है. अगर हम उसी ब्रश से लगाएंगे, अप्लाई भी करेंगे प्रोडक्ट को और ब्लेंड भी करेंगे, उससे आपकी ब्लेंडिंग सही नहीं होगी या ब्रश में जो कलर रहेगा वो आपको उस एरिया से भी बाहर आपका कॉन्टोरिंग या हाईलाइटिंग हो सकता है. इसीलिए आपको हमेशा एक क्लीन ब्रश ही यूज करना चाहिए ब्लेंडिंग करने के लिए, चाहे कोई भी कलर है. एंड दिस इज वेरी ट्रू. अगर आप आईज का भी ब्लेंडिंग कर रहे हैं या फेस में कोई कलर ब्लेंडिंग कर रहे हैं, आपको यही करना चाहिए. आपको एक कलर से, एक ब्रश से आपको डिपॉजिट करना चाहिए प्रोडक्ट, और दूसरे एक क्लीन ब्रश से आपको उसको ब्लेंड करना जरूरी है. So as you can see, I've applied my beautiful cream to the skin. And then before I do anything, I make sure that I'm blending it out. And I'm sure you can see on the screen, it's actually giving that beautiful lift. Now, the shape of my contour or my shape of my shading, I actually do little circles, and I actually do like a C, like a backwards C shape. And the reason why I do this is I really want to sculpt the face and lift the face up. Yeah. I apply in the area that I want it, and then I just do a padding technique with my clean brush just to make sure that it's lovely and blended. So, इनका जो कॉन्टोरिंग है या जो शेडिंग है ये थोड़ा सा सी सेक्शन में इन्होंने किया, जस्ट बिकॉज द फैक्ट कि इससे आपका फेस जो है थोड़ा सा लिफ्टेड लगता है. एंड आपको कभी भी अगेन ड्रैग नहीं करना है आपके बेस को या शेडिंग या हाईलाइटिंग कलर को, क्योंकि जितना आप ड्रैग करोगे आप और ज्यादा ब्लेंड करते जाओगे. आपको इसको डैप करते हुए ही लगाना चाहिए. And as you can see, because it is a self-setting product, I'm applying in the area that I want it. And then I'm doing beautiful movements to make sure that it's lovely and buffed into the skin. Again, when you're working with your bride, and let's say you're going to be doing a photo shoot, she's going to be wearing a product all day, you have to consider that the skin needs to breathe. So less with anything now, with the brand new technology that we have in our camera phones and on the TV and screen, less is more. The less particles, the less layers we've got, the better it looks. Yeah. So basically, आप अगर आपने देखा है, so इन्होंने सिर्फ एजेस को ब्लेंड किया है और हाईलाइटिंग कलर फिर से थोड़ा सा ऐड कर रहे हैं. सिर्फ एजेस को ब्लेंड करना है, पूरे कलर को नहीं ब्लेंड करना है. एंड ऑल्सो जितना हम कम लेयर लगाएंगे, जितना थिन लेयर होगा हमारा, उतना ज्यादा ब्रीदेबल लगेगा स्किन, उतना ज्यादा आपका स्किन फाइन लगेगा देखने में. जितना हेवी लेयर या प्रोडक्ट एप्लीकेशन होगा आपके स्किन में या आपके मेकअप में, उतने प्रॉब्लम्स आने के चांसेस होंगे. स्पेशली आप देखते हो फाइन लाइंस पे, अराउंड द माउथ या अराउंड द आईज, आपके जो फाइन लाइंस होते हैं वो और प्रोमिनेंट हो जाते हैं जब हम बेस लगाते हैं. वो किस लिए होता है? जस्ट बिकॉज द फैक्ट कि हम लोग ज्यादा प्रोडक्ट लगाते हैं कवरेज के चक्कर में. बट हमें कवरेज तो डेफिनेटली देना है, बट उसको लेयर बाय लेयर बिल्ड करना है. हमें एक बार में बहुत ज्यादा प्रोडक्ट नहीं लगाना है. एंड हमें इस चीज का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हम सिर्फ बेस एप्लीकेशन करके कवरेज या कंसील नहीं कर रहे, हम डिफरेंट लेयर्स में उसको कवरेज दे रहे हैं. हम लोगों ने कंसीलर भी यूज किया, उससे कवरेज हुआ. हम लोगों ने बेस किया, उससे भी कवरेज हुआ. हम लोगों ने हाईलाइटिंग किया, उससे भी कवरेज को इंक्रीज किया. हम लोगों ने कॉन्टोरिंग किया, उससे भी हम लोगों ने कवरेज को इंप्रूव किया. सो इट इज ऑलवेज इन लेयर्स. आप कभी भी हमारा हम लोग देखते हैं बहुत सोशल मीडिया में ऑल ऑफ दैट, बहुत सारा प्रोडक्ट लगाना है एक बार में. दैट इज नॉट करेक्ट. अगर आप बहुत ज्यादा प्रोडक्ट लगाओगे, हमेशा आपके क्रैक्स होने के चांसेस ज्यादा होंगे. Okay, so I'm just started to contour the nose area. Now my beautiful model has a lovely nose, but I'm just going to show you how I actually do the shading down the nose area. So what I do is with the same soft brush, I apply it onto the bridge of the nose here,
bring the product down. I actually take it back up into the eye socket area. I'm going to do the other side because I've actually blended that side out. So bringing it down the tip of the nose and then up towards the bridge. I then bring the extra product that's on my brush into the socket area. Yeah. Now, if anyone wants to understand the look I'm creating, if you look at the Kryolan logo, it actually has lines on the nose and goes up into the brow section. So if you look at our logos, if you ever want to understand how to shade and contour the nose area, always think of that Kryolan logo because it actually shows you how to do it. Yeah? So basically, nose को contour करने के लिए this is a very very important and very good टेक्निक है जो एंड्रिया ने बताया. आप हमेशा अपने ब्रश को ब्रिज पे आप प्लेस करें, उसके बाद आप जो भी रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट है उसको आप टिप ऑफ द नोज की तरफ ले एंड रेस्ट आप कहाँ ब्लेंड करें, टू द सॉकेट ऑफ द आईज. उसको आईब्रोज तक ले जाके आप आई सॉकेट में ब्लेंड कीजिए. सो बेसिकली आपका जो प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन होता है ना, वो आपकी टिप ऑफ द नोज पे नहीं होना चाहिए, वो आपके बेसिकली ब्रिज ऑफ द नोज पे होना चाहिए और टिप के तरफ और आपके सॉकेट की तरफ उसकी ब्लेंडिंग होनी चाहिए. And to 10 minutes. I'm done. Okay, so now I've prepped the skin. I'm actually going to let the skin settle. What this does is it actually lets the actual digital complexion range set itself. And when I finish my makeup, I'm going to add a light dusting of the finishing powder over the top to give a beautiful, smooth finish. So I'm going to put my plate down. I'm going to keep my brushes nice and clean. I may need to come back and maybe enhance that afterwards. But as you can see, the skin is looking beautiful and highlighted. It's actually giving me a natural glow. Now, the one thing that was asked in the India market was, how can we make this glossy looking skin in the hot climate that we have? And that's when Kryolan sat down and developed a rich of cream formulas to create that beautiful glow, but without looking overly done and not giving that sweaty look, because that's not what we want from our brides. So I'm going to let the skin settle now. I may need to come back afterwards and do a little fix. I'm just going to let it oxidize and start to set. So then I'm going to start off with the eye makeup. So basically, हम कभी भी इस चीज का कभी भी ये नहीं करेंगे कि हम लोगों ने बहुत सारा प्रोडक्ट लगाया उसको तुरंत पाउडर कर दिया. हमें हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है, हम लोगों ने प्रोडक्ट लगाया जहाँ पे हाईलाइटिंग किया और जहाँ पे हम लोगों ने शेडिंग किया, उसके बाद हमें स्किन को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए कि वो अपने आप चीजों को अब्सॉर्ब करे. एंड अगर ऑक्सीडाइज भी होना है बाय एनी चांस से, फॉर एग्जांपल, वो भी हो जाए. और लास्ट में जाके अगर कोई भी फिक्सिंग करना है वो करे, क्योंकि फिक्सिंग के पहले अगर हमें थोड़ा बहुत चेंजेस करना है, इट्स ऑल राइट. थोड़ा बहुत चेंज करके हम फाइनल फिक्सिंग कर सकते हैं. सो एंड ऑल्सो जब हम स्किन पे हमारा फाउंडेशन को छोड़ते हैं टू एन एक्सटेंट, आप देखते हो कि एक्सेस ऑयल या ड्राइनेस हमें सब कुछ पता चल जाता है अगर हम थोड़ा सा भी टाइम देते हैं. तो अगर एक्सेस टाइम है, अगर हम लोगों ने थोड़ा सा और टाइम हम लोगों ने छोड़ा हुआ है, इन दैट केस क्या होता है, एक्सेस ऑयल अगर आपको लगता है आपको उसको निकालना है, आप निकाल सकते हो. इफ यू वांट मोर कवरेज या मोर हाईलाइटिंग, वो भी आप डाल सकते हो. Okay, so I don't know whether anyone actually just see what I did. So I'm using a product called HD Cream Liner, which is my all-time favorite product to work with. So the color that I'm using is Cacao. Cacao is a beautiful chocolate color, and I'm using it as my base for my eyeshadow. Because this is a silicone-based product, if you have any texture on the eyelids or any wrinkles, the silicone will actually make the area look lovely and smooth. So I'm just applying it onto my brush. I'm making sure that all the creases are lovely and blended, because if you apply a product that's silicone-based on top of a crease or set it, you'll always get the crease. Applying my Cacao from my HD Cream Liner range just on the base of the lash line. I'm going to get my model to open her eyes and look up and then look down. Can you see how it's printed the crease? There's your cut crease. Yeah, this is a technique that I do every time I do eye makeup, no matter what color I'm using, because it helps me show where her natural eye shape is. Yeah. So ये हमारा HD cream liner Cacao, ये brown dark brown color है, इसको आप लगा सकते हो as a eyeshadow base.
एंड सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि हमारे आंखों में कोई भी क्रीज ना हो, और उसके बाद हम लोग किसी हमारे क्रीम लाइनर्स में वी हैव गॉट Open अराउंड your eyes 12 for me. कलर्स, उसमें Look हम up. कोई भी कलर चूज करके हम एज अ आई शेडो बेस हम लगा सकते हैं, एंड देन आपको उसको बहुत क्विकली ब्लेंड करना होता है, क्योंकि अगर हम तुरंत नहीं ब्लेंड करेंगे सो इन दैट केस क्या होता है, वहां पे आपके डिपॉजिशंस होने के, या वो डिपॉजिट हो जाता है, एकदम से सूख जाता है, आप उसको फिर ब्लेंड Up नहीं कर again. पाओगे, तो आपको बहुत तुरंत उसको ब्लेंड करना जरूरी है। आप इसको डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं, एज आई शेडो बेस, एज अ काजल, आप इसको आईब्रो की फिलिंग में भी यूज कर सकते हैं, दैट इज आल्सो अ पॉसिबिलिटी। And I always apply and blend as I go along. I've placed it into the waterline area to give me that nice complementary definition to my lovely model's eyes. You want to prep the lashes for me? 5 minutes. I'm done. Okay, so next thing we're going to do is we're going to apply eyeshadow. Now, when you're thinking about bridal, sometimes you need eyeshadow that really, really works for the eyes that you're working with. I don't want to apply too much product on the eyes because we've actually spoke beforehand. We've done our consultation as a bride, and she actually wants to go with a focal point in on the lips rather than the actual eyes. So I'm going to use a beautiful shading color. This is our variety palette. This is the V6 palette. And we have a beautiful array of colors that are complementary to Indian skin tones. I'm going to be working with these two brown tones here first, and that's going to be my socket color. And I've got a beautiful fluffy brush to apply that. So I'm going to get my model to turn her head towards me, make sure that everything's blended. And I'm just going to add a beautiful array of color into the socket area. So ये जो पैलेट जिससे एंड्रिया यूज कर रही है कलर, इस पैलेट का नाम है वैरायटी पैलेट, वैरायटी ब्राइडल पैलेट, या एंड इसमें से जो हल्का सा ब्राउन, वार्म ब्राउन कलर है, उससे ट्रांजिशन दे रहे हैं एंड्रिया। Yeah, so this is my transition color. So this is the color that's going to be sitting in the socket area to give my model a lovely definition to the eye. And I'm actually going to lift it up and out. I'm going to bring it down into the outer corner of the eye area. And as you can see, I'm working gently, nice and quick to get that beautiful blend. The colors at Kryolan are so high in pigment and they give you this beautiful, smooth tone. I'm going to do the other eye. So face forward for me. And as you can see, I'm making sure that everything's blended. And as you can see, I'm really, really pulling out the outer corner of the eye to create a beautiful almond shape. This is a really nice complementary look, especially if you're working with someone that you really want to accentuate those eyes. I'm going to add a little bit on the outer corners. And making sure all my colors are lovely and blended before I move on to my next stage. Shall we keep checking, making sure that everything's ready? The lashes are ready. Are they? Okay. Do you want to complete it in two? No. I'm going to get it done. 5 minutes. Yep. So then I'm going to go with this beautiful, more grey tone in the palette with the same brush because it actually has a deposit of the colour I've worked with. And I'm just going to add a little bit of definition on the outer corners. I'm then going to work my way all the way up into the socket area to create a beautiful C shape, very similar to the contouring shape or the shading shape that I used, just to add a beautiful amount of definition to the outer corner. And because I've used the same brush, it has the residue of the other eyeshadow on there, so it's actually blending beautifully for me. Again, on the other side. Huh? Give me 1 second. So basically जो आपके आईज का कॉन्टोर है उनको थोड़ा सा डार्क किया इन्होंने, एंड जो लैश लाइन है, लैश लाइन एरिया को थोड़ा सा डीप किया, सिमिलर अर्दी कलर से, and a little bit of black, I guess. Oh no, so this is No, it's basically like a earthy dark brown, grey. yeah. It's like a dark grey. So making sure that my lovely eyeshadow is nice and balanced. I'm now going to place a colour just in the middle. So what I want to do is she's wearing a beautiful beige tone to her dress. So I'm just going to go for this beautiful beige and pink tone in the middle, placing it just on the middle part of the eye. I'm going to show you where I place it.
I tap off my excess and I blend. So I'm actually going to be using no black apart from the eyeliner, which I'm actually going to complete on the stand. So if everyone wants to follow me back to the Kryolan stand, I'm actually going to show you a technique of how to apply eyeliner. Yeah. So basically यहाँ पे जो हमारा 4K ब्राइडल का लुक था, बेसिकली हम लोगों ने बेस पे कंसंट्रेट किया, जहाँ पे आपने देखा हम लोगों ने बेस को HD 4K कैमरा जो टेक्नोलॉजी वाले प्रोडक्ट्स हैं, हमारे डिजिटल कम्प्लेक्शन प्रोडक्ट्स, उससे हम लोगों ने कंप्लीट किया है। आईज को हम लोगों ने एज अ बेस लगाया है क्रीम लाइनर, और उसको स्ट्रक्चर किया है ब्राइडल पैलेट से। उसके बाद जो डिटेलिंग है, वी वुड वेलकम ऑल ऑफ यू टू कम टू अ बूथ। वहां पे हम लोग और जो डिटेलिंग है, डिटेलिंग करके हम इसको फिनिश करेंगे, इस कंप्लीट लुक को, टू हैव एन एंटायर टू गेट अ लुक ऑफ द एंटायर दिस थिंग of the bridal presentation. I welcome all of you to our booth 700. Please come over there and take a look at the final presentation of the 4K bridal. So here basically हमारा presentation is to show कि किस तरीके से आप 4K प्रोडक्ट्स को आप लगाओगे, किस तरीके से उसका इफेक्ट आता है। स्पेशली व्हेन यू टॉक अबाउट द बेस, आप देखते हो बेस इज नॉट एट ऑल हैवी, एकदम भी हैवी नहीं है बेस, और बहुत ही लाइट वेटेड है मेकअप। सो अगर किसी को बहुत लाइट वेटेड मेकअप चाहिए, आप डेफिनेटली बहुत क्विकली एंड बहुत इजीली विदाउट पाउडर एप्लीकेशन या सेटिंग के आप एक बेस डेफिनेटली बना सकते हो। So just as my model has her eyes closed, I'm going to go back in with the concealer that I used earlier. They can wait. No. Yeah, they can. So I'm just going to add it in as a lighter color. Yeah. So जो कंसीलर कलर इन्होंने पहले लगाया था, जो कि थोड़ा सा ब्राइट था, उसी को एज अ हाइलाइटिंग कलर हम लोग यूज कर रहे हैं। And again, because it's a self-setting product, I know that the underneath has actually set for me. But now what I'm doing is I'm just making sure that everything's beautiful and applied. This concealer, and if you get a chance to come over to the Kryolan stand and have a little play with this concealer, is actually beautiful. I'm going to add the blusher on now very quickly. So we have only a few minutes left before the demo is over. So the blusher that I'm going to be using is actually a corrective neutralizer. So I don't know if anyone's seen our neutralizers from the Dermacolor range, which is D30 and D32. I'm actually going to be using that same color as my blusher, because my lovely model has a little bit of pigmentation and texture around the cheek area. I'm color correcting, but I'm using it as a blusher. So basically जो हमारे कलर करेक्टिंग कलर्स है डर्मा में, आपने जैसे D30 या D32 देखा हुआ है, सो ये हमारे ऑरेंज एंड पिंक टोन के कलर्स है, उनको जस्ट नॉट एज अ कंसीलर, एज अ करेक्टर आप यूज कर सकते हो, एज अ ब्लशर कलर भी यूज कर सकते हो। सो वही सेम कलर्स हमारे डिजिटल कम्प्लेक्शन के न्यूट्रलाइजिंग कलर्स में भी अवेलेबल है इन द शेड DCN 46 एंड 47। तो यही वाले कलर्स हम एज अ ब्लश भी यूज करेंगे, क्योंकि ये सेल्फ सेटिंग प्रोडक्ट्स हैं, ये अपने आप सेट हो जाएंगे, आपको अलग से अगेन पाउडर लगाने की जरूरत नहीं है। So once we are done with the blush, probably we would have to wind up, and जो हमारा full look है, we'll do a final finishing of the look at our stay, like at our booth. So I would welcome all of you कि आप हमारे बूथ में आए, and full look जो हम लोग प्रेजेंट करेंगे विद डिटेलिंग एंड एवरीथिंग। आप पूछ भी सकते हैं, और भी बहुत सारे सवाल होते हैं, बिकॉज दिस इज अ न्यू रेंज। आप लोगों को इस रेंज के बारे में बहुत जानकारी नहीं होती है, कितने सारे शेड्स है, कंसीलर के कितने शेड्स है, इन सब के बारे में हम आपको और बता सकते हैं इन द बूथ। सो आप प्लीज बूथ में आइए, और फाइनल जो फिनिशिंग है इसको हम देखेंगे। वन ऑल्सो आई वुड रिक्वेस्ट कि please avail the special discount जो Kryolan आज offer कर रहा है. There was a discount yesterday also. Also there is a special announcement, which is we have a seminar of Andrea on the 4th and 5th of July at the Kryolan store at Lajpat Nagar. Anybody interested, please make your query at the stall and हम आपको guide करेंगे. Yeah, So we're done because we'll be completing the look at the booth. Yeah. So as you can see, I've used the orange at the front of the face.
which gives a beautiful array of color. winding up. I'm going to add a little bit there. And I've just brought the little bit of the more pinkier shade towards the outer section. So this is giving me a beautiful blush to the eye. And just before we get off stage, I'm going to do one more bit. Yeah. Glamour Sparks. No, I know. So I'm going to add the highlighter in the inner corner of the eye before they kick me off stage. So this product here is Glamour Sparks. This is a beautiful glitter product. And I'm just going to add it in the inner corner of the eye. So this is just to add my little bit of glitter and highlight. I don't know whether you can see that on the screen. Can the cameraman zoom into the eyes for me? Yeah, can you see that? So the glitter is so micro fine, it actually highlights the area as well as giving a beautiful glitter payoff. I'm going to tap the excess off my brush and I'm just going to do a padding technique over the top of the HD cream liner. We could do a little bit of the lips and do a walk. I'm going to do that Quickly, now. yeah. So as you can see, I'm pushing these. The Glamour Sparks range comes in an amazing array of color. So we have golden, we have blue. They all have intricate glitter details, but this also doesn't need any glitter glue. You can actually apply it on a cream-based product to add a little bit of highlight in the inner corners. So when my model opens her eyes, can you see how I've just added a little bit of glamour sparks? So a little bit of glamour in the inner corners of the eye area. Yeah. So ये basically आपके Glamour Sparks है. Glamour Sparks self setting product है. ये आपके इसमें आपको glue लगाने की जरूरत नहीं है Just सच. gonna do the lips ये and I'm अपने done. आप set हो जाता है ये products. Okay, last and final bit until I finish the look on the stage, on the stand, sorry. Yeah. So that's the final step that we're doing on stage. So this is our beautiful lip stain in rock. It's a rich red color. This is a beautiful silicone-based liquid lip formula that will last for hours on the lip. So I'm actually going to be applying it on its own. I'm not going to use any lip liner because the pigment in this product is so intense and so full that it actually gives me a nice payoff. So loading up my lovely lip brush. I'm going to get my model to look towards me. And I'm just pressing onto the lip to make sure I've got full balance. Oh. And I'm just gently pulling it all the way across the lip area to give me a nice balanced lip. I'm going to repeat on the other side. I push down on the lip area and pull the color too. I then fill in the gaps. If you want to stretch the lip to make sure you get a nice balanced lip area, you can. I have my finger there just to make sure that any fallout of lipstick actually goes onto my fingers. I'm now going to do the top lip. So my model's going to open her mouth slightly. Open for me. Open. I'm going to put the brush into the inner corner of the lip and I'm going to pull my brush round and twist. See, basically हमारे lip stains है. Lip stains completely self setting lipsticks हैं. ये आप यूज कर सकते हो ombre effect create करने के लिए. There are many colors. So I actually wear lip stain myself and I absolutely love it. And even if you drink, if you're eating and drinking, it literally lasts. ये completely self setting product है और ये आपके lips को dry नहीं करता, आपकी lip के skin को dry नहीं करता. And if you're like me that drinks too much tea and coffee, pressing down on the lip and having that full control over the lip area is really, really good. So as you can see, open for me.
Making sure that the lip line is nice and balanced. Wait. Okay. Huh? I'm going to finalize No, the I got lip and I'm going results. to finalize this complete look over on the Kryolan stand. So if you'd like to come and meet me in person and come and ask me any questions, any tips and tricks, and if you'd like to come and take a photo of my beautiful model, Yeah, and you done. can. Done. Here you go. Last little highlight, just while Avik gets my lovely model ready. This is a product called Glamour Glow. I'm pressing it over the top of the self-setting concealer from the Digital Complexion range, just to enhance that glow area. And I'm just going to use the back of my brush with the lip stain. Let's get that balance. To add my red bindi. ये आपको ऐसे लेना पड़ेगा. Wait, don't move. Yeah. Oh. Okay. There you go, guys. That is a quick look. I am going to finish off and do a little bit more touch-ups over on the Kryolan stand. So if you'd love to come over and come and meet me. Thank you so much, Andrea. And the model could take a look at the, can take a walk at the stage. We're going to have music. Yeah, probably. Thank you so much for this beautiful session of Thank you so much. exceptional makeup look, which is Yeah, modern. Andrea, you can go ahead. Never mind. Go. It's modern and glamorous at the same time. Are you okay to do this? Yeah? Yeah. So like I said, guys, I'll be over on the stand if you want to come and meet me in person and come and take pictures of our models. And maybe you'd like to take a picture with me. I'll be happy to take as many selfies as you like. But if you'd like to follow me over to the Kryolan stand, and I'll meet you guys all there. Ready? We'll go together. Let's go. Thank you so much. Happy time. Thank you, everyone. Thank you. Thank you. Ready? Let's go. Thank you. Thank you, Andrea, ma'am, for this beautiful session.